टाइम देख रही थी एंड आई गेट टू नो दैट इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब इज नॉट द मोस्ट यूज ऐप इन माई फोन बट इट इज पिंटरेस्ट। सो ये आजकल की बात नहीं है, मैं बहुत टाइम से ना पिंटरेस्ट से ऑब्सेस्ड हूँ, लाइक सिंस माई कॉलेज डेज एंड मैं बहुत कुछ देखती रहती हूँ पिंटरेस्ट पे। बट फूड इज समथिंग विच आई एम ऑब्सेस्ड बिकॉज इतने एस्थेटिक वे में उसको प्रेजेंट करते हैं कि जिसको भूख ना हो उसको भी खाने का एक बार तो मन होता ही होता है। लेट मी नो आपके साथ ऐसा होता है या नहीं, मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार होता है। एंड देन आई थॉट क्या ये रियल लाइफ में भी पॉसिबल है या नहीं। सो इन दिस वीडियो हम पूरा अपना खाना जो है वो पिंटरेस्ट वे में खाने वाले हैं। टू बी ऑनेस्ट आई एम नर्वस, और जितना मैं नर्वस हूँ ना उससे शायद 1% मैं एक्साइटेड भी हूँ बिकॉज मुझे ना ये ऐसे पिंटरेस्ट से खाने का बहुत ज्यादा शौक है। टू बी ऑनेस्ट खाना वही होता है, बस उसको एस्थेटिक या फिर एक प्रेजेंटेबल वे में प्रेजेंट किया जाता है आपकी आंखों के सामने। सो आज का ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर, डिजर्ट सब कुछ बहुत ही ज्यादा पिंटरेस्ट वे में होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड फॉर नाउ आई एम हैविंग माय कोकोनट वाटर। सो फॉर द ब्रेकफास्ट वी हैव टू ऑप्शंस, avocado toast and strawberry smoothie, but today I'm gonna make strawberry smoothie because it's a season for berries and strawberry अभी थोड़ी जा रही है, so वो एकदम से चली जाए उससे पहले जितना हो सके मुझे उसको खाना है। But before we jump into the actual video, if you're new to this channel then hi, my name is Trishaa, I'm a lifestyle content creator. I would love if you take a moment, subscribe to my channel, press the bell notification to be a part of Sparkle Squad. So this is what I'm wearing today. This is very pretty activewear set by Zivame and ये बहुत ही ज़्यादा comfortable भी है। If you are looking such for yourself then I will link down in the description box, so don't forget to check that out. Ready and it's looking yum. Also excitement के चक्कर में मैंने ना थोड़ा ज्यादा ही बना दिया है, but ठीक है कोई बात नहीं, अभी बना है तो खा भी लेंगे। And this is the easiest and healthiest breakfast if you want to try out. इसकी रेसिपी मैं नीचे लिंक डाउन कर दूंगी। I take inspiration from Bake with Shive's, एक नंबर रेसिपी है। मैंने इसमें ओट्स नहीं डाले बिकॉज मुझे ओट्स इतने ज्यादा पसंद नहीं है। इफ यू लाइक देन यू कैन डेफिनेटली ऐड। बहुत ही ज्यादा अच्छा है। So भाई मैं तो अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करने वाली हूँ एंड आई विल कैच यू एट द लंच टाइम। बाय। इट्स अ लंच टाइम एंड आई एम हैविंग राजमा चावल इन माय लंच। आई एम सो एक्साइटेड। मैं बहुत टाइम के बाद राजमा चावल खाने वाली हूँ। पहले ना मुझे सैलड खाना था बिकॉज पिंटरेस्ट पे सैलड को इतने एस्थेटिकली प्रेजेंट किया जाता है कि जिसको सैलड पसंद भी ना हो उसको भी एक बार तो खाने का मन हो ही जाए। वी ऑल नो दैट। बट देन मुझे राजमा चावल की क्रेविंग्स भी हो रही थी। आई वाज फिल्मिंग दिस वीडियो, सो आई वाज लाइक लेट्स हैव राजमा चावल इन माय लंच। सो मैंने ऑर्डर तो कर दिया था लेकिन वो हमें पिंटरेस्ट वे में तो डिलीवर नहीं करेंगे, लेकिन हम उसको पिंटरेस्ट वे में एस्थेटिकली सर्व करेंगे एंड वी विल हैव आवर राजमा चावल एज लंच। Lunch ready with me. It's a rajma chawal bowl and it smells so delicious. I think खाने में भी ये उतना ही ज़्यादा delicious होने वाला है बिकॉज मुझे कितने वक्त से इनके राजमा चावल है ना वो ट्राई करने थे। एंड यू कैन सी मेरे ना मुंह में लिटरली पानी आ रहा है। सो लेट मी नो आपको ये कैसा लग रहा है। एंड आई एम सो एक्साइटेड टू जस्ट हैव दिस। सो आई एम गोना हैव माय फर्स्ट बाइट। It's so tasty, it's so beautiful, so elegant, just eating like a wow. मतलब एक नंबर है। इतना ज़्यादा सॉफ्ट क्रंची है। It's a full of flavor. It's literally 10 on 10 from me. I'm gonna enjoy my dinner. I'm gonna enjoy my lunch and I will catch you when it's evening time. Bye. It's just 2 hours that I had my lunch and अभी मुझे कॉफ़ी की क्रेविंग हो रही है। टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा नहीं था मुझे इतनी जल्दी भूख लगेगी। I'm not
that much hungry because मेरा breakfast और lunch इतना ज़्यादा heavy था कि I don't think मैं रात का dinner भी कर सकूँगी या नहीं. I'm not sure. मैंने सोचा था I will go to a cafe and order some croissant or coffee and have that beautiful Pinteresty evening snack. But अभी फिलहाल मुझे coffee की बहुत ज़्यादा craving हो रही है and सुबह से मैंने coffee भी नहीं पी है. So this would be my first cup of coffee and to be precise मुझे एकदम ना वो summer वाली creamy cold coffee पीनी है. So let's make delicious Pinterest inspired coffee and enjoy our evening. Those external noise because I am standing in my balcony enjoying my delicious coffee. मैं बहुत टाइम बाद से balcony में आके ना coffee enjoy कर रही हूँ. I have changed into my PJs because it's dinner time and today I'm going to make one of my favorite comfort food for dinner. And now I'm going to change the vibe of my room. A little transition to change the vibe of my comfort place. So that's the vibe of my room. I'm gonna enjoy my dinner watching my favorite show now. डिनर के बाद some time for some dessert and ये मैंने डिनर के साथ ही बना लिया था. I am having this viral strawberry dessert and यहाँ पे थोड़ा सा twist है. I am having it with Nutella. Trust me, this is delicious. अगर आपने ये try नहीं किया, trust me, you are literally missing out on. I hope you enjoyed this video. If you do, then don't forget to do all the good things like comment, share and subscribe. With this, I'm signing off. We'll meet you in my next video. Till then, stay sparkly and good night.